Hello everyone, this is Dr. Monis Khan. I got an All India rank of 2479 in this year's NEET PG exam, and this video is about my NEET PG preparation journey. So my NEET PG preparation journey started last year. I am from batch 2018 and last year जब मेरी internship खत्म हुई उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक NEET PG को एक serious attempt दे सकता हूँ. And the exam was like 2 months away when I started preparing, and I just came across cerebellum at that point. And I saw a video on YouTube, and I just saw that there was something called live classes going on in cerebellum, and I just took them. And I was not gonna give a very serious attempt in the first time. It was kind of कि देखते हैं क्या होगा कैसे होगा. And I came across cerebellum, and then I tried the live classes, and I just kind of knew that this is something which I'm gonna stick to. जब पहला अटेम्प्ट दिया उसके बाद 33,000 रैंक आई, एंड आई गेव अ वेरी सीरियस अटेम्प्ट इवन इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट. Whatever time I studied for, it was like 2 months, around 1.5 to 2 months, and it was I gave my all in these 2 months, and I achieved a rank of 33,000. So it was I didn't expected that rank to I didn't expected this rank from myself. So I knew that I was going into the right journey. Cerebellum is the right thing for me. So it started from there on. I knew that I have now my resource fixed, and I took a break of while, and from 5th September last year I started it all again. So in my case, my resource was fixed. Anyone who is preparing for NEET PG, they should have a fixed resource from day one. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एनाटमी आज कहीं से पढ़ लें और 2 महीने बाद उसको आप स्विच कर दें. सो दिस इज यू आर जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स डिजास्टर. सो यू हैव टू फिक्स अ रिसोर्स. सेकेंड थिंग इज कि आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के बेसिक पिलर्स पता होने चाहिए. तो अगर हम नीट पीजी की बात करें, सो नीट पीजी के केस में वो आपके पीवाईक्यूज होते हैं, आपका मल्टीपल रिविजन्स होते हैं, आपका एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल्स होती हैं, एंड आपके जीटीज होते हैं. सो दीज आर द बेसिक पिलर्स जो अगर कोई भी एस्पिरेंट अगर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ले तो कोई भी रैंक हासिल कर सकता है. सो उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि उनका हाउ शुड अ डे इन देयर लाइफ शुड लुक लाइक. सो सपोज अगर आज आपने कोई लेक्चर अटेंड किया है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट डे आप उस लेक्चर को रिवाइज करेंगे, क्योंकि विदाउट रिवीजन इट्स ऑफ नो यूज. तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको उसको रिवाइज करना जरूरी है. जब आप उसको रिवाइज कर लेंगे तो आप उसी सब्जेक्ट के आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे. आप आईएनए सेट के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, एफएमजी के सॉल्व करेंगे, नीट पीजी के भी पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे. दिस विल गिव यू अ वेरी गुड idea of all the 3 entrance examination, because medical field is very vast, but कितना वो लोग कितना ज्यादा इतने सालों साल तो कितना ज्यादा किसी टॉपिक्स को नए टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं. अल्टीमेटली दे विल हैव टू जस्ट ट्विस्ट दोज टॉपिक्स विच हैव बीन ऑलरेडी बीन आस्क्ड. सो पीवाईक्यूज आपको जरूर आपको सॉल्व करने हैं उनके. देन यू हैव टू गो फॉर द एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल्स, बिकॉज आफ्टर ऑल दिस इज एन एमसीक्यू एग्जाम. आप कितना थ्योरी पढ़ लेंगे. द थिंग विथ रीडिंग थ्योरीज, इट कैन टेक यू अ सर्टेन लेवल. बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल आपको एमसीक्यूज ही लेके जाएंगे. सो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, बी इट कस्टम मॉड्यूल्स और बी इट सॉल्विंग इनफ ईएनडीज ऑफ सब्जेक्ट्स बाय द सब्जेक्ट फैकल्टीज. So you have to solve MCQs. Enough MCQs should be there. So as I said, in my case it was cerebellum. So I used to go with midday modules. There is thing called midday modules इन cerebellum, जिसमें फैकल्टीज जो है खुद कस्टम मॉड्यूल्स आपको स्टूडेंट्स के लिए बना के देते हैं. बिकॉज कस्टम मॉड्यूल कैन बी वी ऑल नो दैट कस्टम मॉड्यूल्स आर वेरी वास्ट. सो अगर हम खुद से कस्टम मॉड्यूल्स बनाने जाएंगे तो वी कैन गेट लॉस्ट इन दैट थिंग. एंड मिड डे मॉड्यूल्स इन cerebellum really helped me. And yes, as I said that you need to give enough ENDs as well. So जिस भी प्लेटफॉर्म से आप ENDs करेंगे, you attend all the ENDs. You attend all the ENDs. Whatever your mistakes you are making in those ENDs, just annotate them in your book. But you need to give all the ENDs. ENDs से आपको भागना नहीं है, because giving that END after reading a subject thoroughly will give you a very good closure to that subject, right? And yes, अगर आप PYQ सॉल्व कर रहे हैं, so you are half job is done. Getting a good hold on PYQs and PYTs, is already you are already ahead of a half of the people, right? So
Now this take care of all the pillars as I talked about. Yes, and yes, GTs. GT से एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि कितना ज्यादा GTs देना है, कितना क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए GT देने की, और कैसे इन GTs को रिव्यू करना है. सो आई विल टेल यू माई मिस्टेक्स बट आई थिंक आई डिड रॉन्ग, and how should you go with GT. So I used to give GTs as and when they used to come in the app, and every topper, you look to every topper in NEET PG or INICET, they would have given around something around like 20 GTs, 18 to 20 GTs, or even more. In my case it was like something around 18 GTs, 17, 18 GTs, and you can give as much GTs. You can go for, like, initially you can give, when you are starting very in the initial phases, you can just go with like one GT per month. In the later phases you can go like 15 giving a GT every 15 days. Some students even give GTs even earlier, every 10 days or so, and it all depends on you. In my case it was like every 15 days I was giving a GT, basically as and when it used to come in the apps, and they used to give it every 15 days. After GTs, yes, how to review those GTs. This thing is something which I realized very late. I wasted a lot of my time in wrongly reviewing those GTs. It used to take me a lot of time to review those GTs. I just used to get lost in them. And आपको GT review करना है, you need to also need to spend time in reviewing those GTs. But you just don't get lost in that. जस्ट रिव्यू देम. लाइक अगर आपने 3.5 घंटे का GT एक दिया है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको उस GT को रिवाइज कर रिव्यू करने में 6 घंटे या 7 घंटे भी लग जाएं. अगर आप टॉपिक्स को, जो आपके टॉपिक्स गलत हुए उसको अच्छे तरीके से आप उसी टाइम पे, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो आपको 6 से 7 घंटे भी लग सकते हैं. और आई थिंक दिस इज फाइन. इतना आपको देना भी चाहिए GT को रिव्यू करने में टाइम. और जैसे जैसे आप GT आगे बढ़ते रहेंगे, आपके GT के नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, नंबर ऑफ करेक्ट्स आपके बढ़ने लग जाएंगे, तो आपका रिव्यू टाइम भी कम होने लग जाएगा. एंड यस, यू शुड रिव्यू द एंटायर GT. गो विद द दिस इज द थिंग विच आई रियलाइज वेरी लेट. गो फॉर फर्स्ट रिव्यूइंग द रॉन्ग वंस. पहले आप अपने गलत आंसर्स को रिव्यू कर लीजिए. व्हेन यू आर डन विद दैट, देन यू गो फॉर द करेक्ट वंस. बिकॉज करेक्ट, व्हाई यू हैव टू गो फॉर द करेक्ट वंस? बिकॉज उन करेक्ट वंस के अंदर भी ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपने गैस से सही करोगे, जो आपको, आप में 2 ऑप्शन आपने रूल आउट कर लिए होंगे, 2 ऑप्शन में आपको पता नहीं होगा इतना ढंग से कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा नहीं. और समटाइम्स वी जस्ट टेंड टू गेस, ऐसे ही गेस कर देते हैं विदाउट एनी इंटेलिजेंट गेस. सो यू नीड टू गो थ्रू दोज क्वेश्चंस एज वेल. And so basically you need to revise the entire GT, but go with the wrong ones. Another thing is कि study techniques कैसे अपनी अच्छी करें. So the best approach to this thing is कि आप अपने दिन को टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी इनिशियल फेज ऑफ प्रिपरेशन में हैं, so आप यू कैन स्टार्ट विद 45 मिनट्स ऑफ टाइम स्लॉट्स, राइट. आप जैसे सपोज आप 9 बजे अगर अपनी कुर्सी पे बैठ गए हैं, तो आप अपने पहला स्टडी सेशन 45 मिनट्स का रखिए. स्टडी सेशन का मतलब है कि आप उसके अंदर अपना अनडिवाइडेड अटेंशन देंगे. 45 मिनट्स यू विल बी जस्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड इनटू द बुक्स. जैसे ही वो टाइम स्लॉट खत्म हो, यू कैन गिव अ गुड 5 to 10 मिनट्स ब्रेक टू योरसेल्फ. यू कैन लिसन टू अ सॉन्ग और व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड यू शुड हैव एन अनडिवाइडेड अटेंशन स्पैन, राइट. सो ऐसे ही आपका पूरा दिन डिफरेंट टाइम स्लॉट्स के अंदर डिवाइडेड होगा. फॉर इनिशियली इट कैन बी 45 मिनट्स ईच, फॉलोड बाय अ 5 to 10 मिनट्स ब्रेक. And also you need to not just time slots, you also need to monitor the concentration levels on this in those time slots. You can give a rating of like out of 10 how much you wanna give your concentration rating. For example, मैं जैसे करता था कि अगर मैं एक टाइम स्लॉट अगर मैंने बनाया है 45 मिनट्स का, so I would give a rating of concentration rating of out of 10. अगर मैं पूरी तरीके से फुल्ली कंसंट्रेटेड था, तो आई वुड गिव लाइक 8 out of 10, 9 out of 10. आई वॉज लाइक कंप्लीटली लॉस्ट और अनप्रोडक्टिव, सो आई वुड गिव लाइक 3 out of 10 और 4 out of 10. दिस वे आई वॉज काइंड ऑफ हैविंग एन अकाउंटेबिलिटी की, मतलब हाँ, मुझे कंसंट्रेशन लेवल्स मॉनिटर करने हैं. यू नीड टू राइट इट ऑल डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, द टाइम स्लॉट्स एंड द कंसंट्रेशन लेवल इन दैट टाइम स्लॉट्स. तो ऐसे ही आपके पूरे दिन में 10 से 11, 12 टाइम स्लॉट, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा टाइम स्लॉट था एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट, आपके पूरा डॉक्यूमेंट हो जाएगा एक पेपर पे. एंड एट द लास्ट आप उसको टोटल करेंगे और कितने आपका नंबर ऑफ स्टडी आवर्स पूरे दिन में, इफेक्टिव स्टडी आवर्स, एक्टिव स्टडी आवर्स आपके निकल आएंगे. आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस कि अगर आप वंस यू स्टार्ट मॉनिटरिंग योर टाइम, राइट, you will initially think without monitoring, you will initially think that you are studying like 11 to 12 hours, good 11 to 12 hours. Once you start monitoring those hours, definitely it will come out to be 7 to 8 hours, 100%.
एंड देन एक्चुअली यू विल रियलाइज दैट एक्टिवली आप सिर्फ 7-8 घंटे पढ़ रहे थे. तो ये टाइम मॉनिटरिंग दिस वॉज समथिंग आई रियलाइज प्रेटी लेट. And if you can implement this thing early on in your preparation, I mean, definitely it will gonna help you immensely. Another thing that's very important is you need to cut down social media. I again realized this thing very late. From the day one, just uninstall Instagram, Snapchat, or whatever social media apps you are having. And these social media apps are the biggest time killers. और ये हमें तब तक रियलाइज नहीं होगा जब तक उन एप्स को अनइंस्टॉल नहीं कर देंगे. और अगर आप अपना टाइम 5 to 10 minutes का, if you're taking break, in those break periods, talk to your family members, listen to some good music, or just lie down on your bed. But social media इस्तेमाल मत करो. From 5 to 10 minutes to 15 minutes कब हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा. और दूसरों के फेक लाइफ स्टाइल्स को आपको देख के you are just gonna feel like कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं यहाँ बैठ कर तैयारी कर रहा हूँ और यहाँ पर लोग घूम रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर. आपको यू डेफिनेटली गोना फील दिस वे. सो यू नीड टू कट डाउन सोशल मीडिया. नाउ एट द लास्ट आई वुड लाइक टू एम्फसाइज ऑन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज कंसिस्टेंसी. फ्रॉम द डे वन ऑफ योर प्रिपरेशन टू द वेरी लास्ट डे यू शुड बी कंसिस्टेंट. ईच एंड एवरी डे यू नीड टू शो अप. जिस दिन आप उस एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलेंगे, यू शुड बी एबल टू टेल योर सेल्फ कि हाँ, मैंने एक भी दिन ऑफ नहीं लिया. जिन दिनों मुझे पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा था, उस दिन भी मैंने शो अप किया है. चाहे मैंने 1 घंटा ही पढ़ा, लेकिन आई वॉज देयर एवरी डे. एंड you will have immense amount of satisfaction on that day, the day you walk out of examination hall and you are able to tell yourself that I didn't took a day off. And you will thank yourself every day you wake up in the morning, and you will have that amazing feeling, and you will have no guilt in yourself. You will be able to tell yourself that I did my best. Whatever the result will be, I will readily accept it, but I did my best. So maintain the consistency. You need to be obsessed with that PG seat from the day one to the very last day. You might start slow, it doesn't matter at all, but you need to be consistent. And remember, it's the game of consistency. 11-12 महीने बैठना एक कुर्सी टेबल पे and studying 90 subjects is no joke. And the one who can do this consistently is gonna make it. And the final words, that is, you need to keep that burning desire alive within yourself. कि इसकी शुरुआत मैंने क्यों करी थी और मुझे कहाँ तक जाना है. और you need to start manifesting. Just close your eyes and start thinking of the day you will crack that exam. The result will be there in front of yourself. क्योंकि ये सच्चाई हर एक नीट पीजी एस्पिरेंट की जिंदगी में आने वाली है कि एक दिन उसके फोन पे एक पीडीएफ आएगा जिसे वो स्क्रॉल डाउन करेगा, उसको अपना रोल नंबर दिखेगा और उसके आगे उसकी रैंक होगी. वो कुछ मैजिकल नंबर्स लिखोगे जो उसकी लाइफ को फॉर एवर के लिए चेंज कर सकते हैं. एंड यू नीड टू जस्ट स्टार्ट मैनिफेस्टिंग कि हाँ, वो दिन होगा. अब वो दिन कैसा होगा, उस दिन मैं खुशी से कूद रहा हूँ या फिर उस दिन मैं उदास हूँ. इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप आज क्या करते हैं. सो जस्ट कीप योर फोकस ऑन द प्रोसेस. द प्रोसेस इज इन योर हैंड, द प्रोसेस इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, एंड द रिजल्ट इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट. सो अगर आप अपनी प्रोसेस पर फोकस कर पाते हैं, द रिजल्ट विल बी ग्रेट. एंड जस्ट हैव एन एटीट्यूड इन योर सेल्फ दैट की whatever the result will be, I am ready to accept it as it will come. But right now I need to focus on the process, and the process should be great. I should be able to tell myself ki yes, I did it. I gave the performance of my life. Thank you.